Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to start with a very important topic, that is monoclonal antibodies. This topic has been in news since the month of March 2021. Even before that, but yes, scientists and even doctors have, you can say prioritized studying this topic a lot, monoclonal antibodies. What are these and how they are going to help in the COVID-19 crisis that we are going to study. Okay, and also do not forget to like, share and subscribe to the channel. Even if you do not want to share the video, you can at least like it if you really like it. And if you haven't subscribed to the channel, then don't wait to subscribe. Right? Hesitate नहीं करना है, wait नहीं करना कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज ही subscribe कर लेना है ताकि अगर कोई important video हम upload करें वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे नोटिफिकेशंस के द्वारा, ठीक है. एंड ऑल्सो द क्लास पीडीएफ्स आर अपलोडेड ऑन माय टेलीग्राम चैनल सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज. लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द पीडीएफ्स फॉर योर इंस्टेंट रिविजन. Okay, let's start talking about the monoclonal antibodies. Now, monoclonal antibodies, it is an antibody made by cloning a unique white blood cell. White blood cell को क्लोन करके ये एंटीबॉडी तैयार की जाती है. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. तो आपको पॉइंट याद रखना है, व्हाइट ब्लड सेल. प्रीलिम्स में वो आपको कंफ्यूज कर देंगे रेड ब्लड सेल लिखकर, दैट इज रॉन्ग. ओके, सो ऑल सब्सिक्वेंट एंटीबॉडीज डिराइव्ड दिस वे trace back to a unique parent cell. Monoclonal antibodies can have monovalent affinity binding only to the same epitope. We are going to understand each one of the terminologies, don't worry. So over here you can see, first of all let us understand what was the news. Okay, an experimental monoclonal antibody cocktail, that is region COV2, has been found to be a life-saving treatment for some of the most severely affected COVID-19 patients. Results of a clinical ट्रायल इन यूके हैव शोन. यूके में एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ है. यू हैव टू रिमेंबर कहां पर हुआ है, यूके में, इंडिया में नहीं, यूके में हुआ है. ठीक है, दिस क्लिनिकल ट्रायल wherein they have seen that an experimental, underline this as well, experimental monoclonal antibody cocktail, that is mix of monoclonal antibodies, which it is an experiment right now, which is known as region COV2. It has been found to be a life saving treatment. इसको life saving treatment के तौर पे पाया गया है. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. किसके लिए? जो सीवियर केसेस होते हैं ना कोविड के, उसके लिए. However, such therapies are expensive because they are difficult to make and take a lot of time. Such experimental cocktails of antibodies that they have prepared, it is not very easy to do. It's very expensive, it is complex, and it is also a little, you can say tough nut to crack. Then the next question is, what are monoclonal antibodies? Next question अपना ये आता है कि ये monoclonal antibodies होते क्या हैं? See, कोई भी वायरल इन्फेक्शन बॉडी में आता है ना, उसको फाइट करने के लिए बॉडी प्रोटीन्स क्रिएट करती है जिसको एंटीबॉडीज बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज द बॉडी ऑफ अ पर्सन. मान लीजिए कोई इन्फेक्शन इस बॉडी में आया, some kind of infection has entered this body. Your body, what will it do? It will create proteins. These proteins will wipe off or fight with these infections. Okay, these proteins are known as antibodies. इन्हीं proteins को हम antibodies बोलते हैं. Monoclonal antibodies, these are artificial antibodies. Natural antibodies your body prepares it, but ये जो monoclonal antibodies है ये artificial antibodies है. These are not naturally prepared. ये experimental है ना, तो ये artificial antibodies है. ये point आपको याद रखना है. That mimic means copy. मिमिक का मतलब क्या होता है? कॉपी करना, नकल उतारना. मिमिक द एक्टिविटी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम. हमारा इम्यून सिस्टम जैसे एक्ट करता है ना जब कोई वायरल इन्फेक्शन आता है, उसी को कॉपी करता है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. सो दे आर प्रोड्यूस्ड थ्रू अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडीज फ्रॉम ह्यूमन ब्लड एंड देन क्लोनिंग देम. दैट इज उसका डुप्लीकेट बनाना. ह्यूमन ब्लड से स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को एक्सट्रैक्ट करके उनको क्लोन किया जाता है और ये व्हाइट ब्लड सेल से लिया जाता है. प्लीज राइट इट डाउन. ठीक है. Now these monoclonal antibodies, they are designed to target a virus or a specific part of one. For example, region COV2. It is a cocktail of two monoclonal antibodies to target SARS-CoV-2. ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है ना, ये हर वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं करेंगी. ये स्पेसिफिक इन्फेक्शंस के लिए बनाई जाती है. जैसे रीजन CoV2 को बनाया गया SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन से लड़ने के लिए. And these bind to specific parts of the spike protein of SARS, blocking its ability to infect the healthy cells. For example, this is the you can say
कोरोना वायरस, ठीक है, ये हो गया SARS-CoV-2। तो ये स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, दीज प्रोजेक्शंस आर स्पाइक प्रोटीन्स। व्हाट दिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज विल डू, दे विल ट्राई टू स्टिक टू दीज स्पाइक प्रोटीन्स, ऐसे इस ब्लॉक कर देंगे, दे विल ब्लॉक देम सो दैट दीज स्पाइक प्रोटीन्स विल नॉट इन्फेक्ट योर सेल, आपके ह्यूमन सेल से चिपक नहीं पाएंगे, उसको पहले ही ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, ये इनका काम होगा। बट ये बहुत एक्सपेंसिव थेरेपी है, इस तरीके की थेरेपी काफी टाइम भी लेती है और एक्सपेंसिव भी होती है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, अ लिटिल बिट ऑफ अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। Unacademy has launched India's most comprehensive UPSC test series. Practice till you crack it. Unacademy, we are going to provide you 80 tests every year, 50 prelims related tests and 30 mains related tests. And out of these 50, we have 20 full length tests, 12 sectional tests and 18 topic wise tests. Okay? Topic wise test भी हम provide कर रहे हैं ताकि आप जो topics पढ़ो ना, उससे related question solve करके भी आप अपने confidence को बढ़ा सकते हो, ठीक है। प्रीलिम्स में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कॉन्फिडेंस टॉपिक वाइज टेस्ट देकर भी बढ़ता है। These tests will be worth ₹30,000, but don't worry, they will be given to you free of cost if you take 1 year or plus subscription on Unacademy Plus। अगर आप 1 year या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन Unacademy Plus पर लेते हो तो ये टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है। ये जो ऑफर है ये 30 जून तक ही है, उसके बाद आपको सेपरेटली टेस्ट लेने पड़ेंगे, इसलिए 30 जून से पहले अगर आप सब्सक्राइब करते हो Unacademy Plus को तो आप इस ऑफर का पार्ट बन सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज कोड अर्पिता10 टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन। आपको आपके सब्सक्रिप्शन पर 10% का छूट भी मिल रहा है अगर आप ये कोड यूज करते हो अर्पिता10। ओके, सो मेक श्योर दैट यू टेक योर प्लस सब्सक्रिप्शन before 30th June. Now the next important aspect is how important are they in COVID-19 treatment? ये monoclonal antibodies COVID-19 के treatment के लिए important कैसे हैं या कितनी important है? Now the research which was done in UK during the pandemic has increased the optimism in monoclonal antibodies. So you can say that there are good chances that these antibodies have the ability to help reduce the risk of hospitalization. मतलब अगर केस होता भी है कोविड का तो वो माइल्ड रहेगा, सीवियर केस में तब्दील नहीं होगा। If there is even a chance of a person getting affected by COVID, that person will not require hospitalization. That chance of hospitalization is decreased if this monoclonal antibodies therapy is used on the person. Some monoclonal antibodies have shown the ability to retain activity against multiple variants also. जो waves आ रही है ना, ये waves क्या हैं? अलग अलग variants बन के आ रहे हैं कोरोना वायरस के, तो उन अलग अलग वेरिएंट से लड़ने में भी कुछ टेस्ट ने ये शो किया है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज काफी इफेक्टिव है, राइट। एंड अ वेरी क्रूशियल एंड प्रॉमिसिंग पार्ट ऑफ दिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी इज दैट दे आल्सो हैव लिमिटेशंस। सो फार दीज थेरेपीज हैव शोन ऑप्टिमिज्म, दे हैव शोन success, right, with mild to moderate COVID-19 cases. They are not approved for use in those who are hospitalized. जो अभी hospitalized हैं या जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है ना, उन पर अभी इस ट्रीटमेंट को यूज करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि अभी हमने टेस्ट ही सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट COVID-19 पेशेंट्स पे किया है, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड देम द राइट पेशेंट्स एट द राइट टाइम. So before the case becomes severe, if this therapy is used, then there are high chances that hospitalization will be reduced. Okay, point clear? Now some emerging variants that are coming to India also, for example we have the Delta plus variant, right, which is variant of interest. Soon they are saying that it can become variant of concern. Some emerging variants have also displayed ability to nullify the use of monoclonal antibodies. This is also a risky part. कुछ variants जैसे अभी नया variant निकल के आ रहा है डेल्टा प्लस, उनमें ये ability है कि वो इस तरीके के एंटीबॉडीज को नलिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो अभी टेस्टिंग चल रही है, राइट नाउ वी आर टेस्टिंग, वी आर एक्सपेरिमेंटिंग. नो फर्म डिसीजन हैज बीन मेड टू फाइनली यूज दिस पर्टिकुलर थेरेपी in the patients of COVID-19. Now the question is how these monoclonal antibodies are created. ये monoclonal antibodies create कैसे होती हैं? They can be created in the lab because these are artificial antibodies ना, ये artificial antibodies है, तो ये body में नहीं बनती है, ये lab में create की जाती हैं by exposing white blood cells to a particular antigen. Now the question is what is an antigen? So antigen is any substance that causes your immune system to produce antibodies against it. This means your immune system does not recognize the substance and is trying to fight it off.
So it can be a substance from the environment like chemicals, bacteria, virus और pollen. ये कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज को बनाता है उससे लड़ने के लिए, उस सब्सटेंस से लड़ने के लिए. और इसका मतलब है कि इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है इस सब्सटेंस को जो आपकी बॉडी में आया है, इसीलिए उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाया जा रहा है. तो एंटीजन एक पर्टिकुलर व्हाइट ब्लड सेल को एक एंटीजन से एक्सपोज किया जाता है, तब ये एंटीबॉडीज बनकर आती हैं. टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड, सिंगल व्हाइट ब्लड सेल इज क्लोन्ड, which in turn is used to create identical copies or clones of the antibodies. Okay, so these antibodies, it is said that they block the spike protein of SARS-CoV-2 virus so that it cannot infect your cells. Okay, now what is the need for monoclonal antibodies? This can be the question for GS paper 3, आपके GS paper 2 और GS paper 3 में question आ सकता है. So in a healthy body, immune system is able to create antibodies. आपकी body अगर healthy है तो आपका immune system antibodies बना देता है, ठीक है, which are tiny Y-shaped proteins in our blood that recognize microbial enemies and bind to them. For example, I'll show you an image. मान लीजिए ये है आपका, this is SARS-CoV-2 virus. Okay, so this particular and when it will enter a human body, the immune system will create antibodies that will be tiny Y-shaped proteins. तो ये Y-shaped कैसे होंगे proteins? ऐसे. समझ आ रही है बात? They will block the spike proteins of coronavirus. So hence the coronavirus will not be able to enter, infect your cells. Okay, point is clear. Now for people whose immune systems are unable to make sufficient amounts of antibodies, for example people with comorbidities, scientists proved a helping hand using monoclonal antibodies. मान लीजिए वो लोग जिनको comorbidities है और कोई बीमारी है, वो उनकी बॉडी sufficiently antibodies नहीं बना सकती है लड़ने के लिए वायरस से, तो इस केस में साइंटिस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को बेचते हैं बॉडी में ताकि आप वो एंटीबॉडीज, आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज शरीर में आए बैक्टीरिया वायरस से लड़ सके. Now the idea of delivering antibodies to treat a disease, these artificial antibodies, it started since 1900s when Nobel Prize winning German immunologist Paul Ehrlich proposed the idea of Zauberkugel, that is a magical bullet, which is a compound which selectively targets a pathogen. And from then it took 80 years of research to finally arrive at the Monoap CD3, the world's first monoclonal antibody to be approved for clinical use. So this is important. आपके वर्ल्ड की सबसे पहली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कौन सी थी? म्यूरोमोनैप CD3, जिसको अप्रूव किया गया क्लिनिकल यूज के लिए ह्यूमंस पर. इट इज एन इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग given to reduce the acute rejection in patients with organ transplants. Organ transplants में क्या होता है, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होती है, ठीक है, तो उस केस में हमारी बॉडी जो है वो धीरे धीरे कोई भी ड्रग्स दिया जाए उसको रिप्रेस करने लगती है, रिजेक्ट करने लगती है. उस केस में म्यूरोमोनैप CD3 यूज होता है ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट स्पेसिफिकली जिन पेशेंट्स में हुआ है उनकी इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके और ड्रग्स से या मेडिसिन से जो भी रिजेक्शन आ रहा है बॉडी की तरफ से उसको रोका जा सके. So monoclonal antibodies are now relatively common. They are used in treating Ebola also, HIV also, psoriasis also. Psoriasis क्या है? It's a skin condition. इसमें क्या होता है, स्किन पे ना red patches, painful patches होने लग जाते हैं, right? So in all these cases, this monoclonal antibody technique is right now currently being used. So I hope you enjoyed this lecture series. It was informative, and now you will be in a position to answer any question related to monoclonal antibodies in your preliminary examination. I hope you enjoyed this session. Thank you and have a wonderful and beautiful day ahead.